welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual fund related matters. You can call us on the following three lines: 2331-4444, 2371-7106 and 2342-1050. Please do remember to prefix 011 if you are calling us from outside Delhi. I am Ishan Mittal and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार, आरती खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आज रविवार है और प्रत्येक रविवार की तरह आज हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों का जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर सीधे फोन कर सकते हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23421050। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ वैल्यू रिसर्च के धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका अमरीश। और पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं ईशान मित्तल। Thank you, Amrish ji. First, the headlines. 7 IPOs worth 1,500 crore rupees to hit the markets this week. Foreign investors pumping over 30,000 crore rupees into the Indian equities market so far in June. And southwest monsoon advances over parts of east, central and northwest India, including Delhi, Mumbai and its suburbs. 1,500 करोड़ रुपए के 7 आईपीओ इस सप्ताह बाजार में उतरेंगे। विदेशी निवेशकों ने जून में अब तक भारतीय इक्विटी बाजारों में 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया और दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, मुंबई और उसके उपनगरों समेत देश के पूर्व, मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में अगले कुछ सप्ताह में सक्रिय रहेगा। Now for the first story. As many as 7 public issues worth 1,500 crore rupees will hit the markets this week, with 3 being the mainstream ones and 4 in the SME space. The first to hit the market is drone maker Idea Forge Technology, which will open for subscription on June 26 and close on June 29. This will be followed by Cyient subsidiary IPO. The IPO of electronics manufacturer Cyient DLM will open on June 27 and close on June 30. The initial share sale of PKH Ventures will be the third IPO that will kick off on June 30. The issue closes for subscription on July 4. Apart from the mainstream IPOs, 4 companies in the SME space will also hit the markets this week to mop up a total of 107 crore rupees. The IPO of Pentagon Rubbers will hit the street on June 26 and close on June 30. The IPOs of Tridya Tech and Synoptics Technologies are set to open on June 30 and close on July 5, while Global Pet Industries is bringing its IPO on June 29. और चलते हैं अगली खबर की ओर। विदेशी निवेशकों ने भारत में खरीदारी का क्रम जारी रखते हुए जून के महीने में अब तक इक्विटी बाजारों में 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने 1 से 23 जून के बीच भारतीय इक्विटी में 30,664 करोड़ रुपए का कुल निवेश किया। हालांकि इसी अवधि में उन्होंने भारतीय बाजारों से 3,051 करोड़ रुपए निकाल लिए। इस तरह भारतीय बाजारों में उनका निवेश 27,613 करोड़ रुपए का रहा। इससे पहले विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी में मई में 43,838 करोड़ रुपए, अप्रैल में 11,631 करोड़ रुपए और मार्च में 7,936 करोड़ रुपए का निवेश किया था। वर्ष 2023 में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी में लगभग 60,000 करोड़ रुपए और डेट बाजार में 4,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। And now we have our first caller on the line, Nupur ji from Pune. Nupur ji, please ask your question. Hello.
Nupurji, can you hear us? Yeah, I can. Okay. Good evening, sir. I want to understand about profit booking in mutual funds. When can we book a profit, and what should I keep in mind while booking that, and the tax implications of this? Thank you. Okay. Booking profit, the mutual fund should not be used for trading, and profit booking should be done with a mindset that, it should be used as an investment vehicle. Let me just explain you the difference between investment and trading. Or, I would say rather trading, not rather trading, but speculation. When you invest to not sell is investment. And when you invest with a mindset that the moment it goes up, you will sell, that is trading. And mutual fund should not be considered a vehicle like that. But it's important that, you should also sell your investment for a variety of reasons. One is that if you are investing for a few years and you are investing regularly, you are doing your SIP, and your goal has been achieved, sell it. Don't even think about anything. If you are investing with a with something in mind, and that has been achieved, that is the time you should sell. And even if it turns out to be a little early, you are thinking of buying a car or accumulating saving money for making the down payment, it has happened in 3 years instead of 5 years, go ahead and take that money out. Other reason is when your investments are disappointing and they are not proving good. That is when you should if you will not consider your investment as a fresh investment, as a new investment today, that is a good enough reason that it should not be your ongoing investment, or it should not carry on as your investment. So if an investment is not good. Third is that just because the price has gone up should not be the reason to sell, because you will be presented with another challenge. The moment you take your money out, what will you do with it? You will wait for the correction. And it is very hard to guess when the market will come down, when the market will go up, which fund will actually do better than this one which you held. So I really don't have much of an idea about how to trade or how to timely get in and out of mutual fund. But if you follow these 2-3 things, it will not be very disappointing. और कोलकाता से हमारे श्रोता संजय हमसे जुड़ चुके हैं। संजय जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार जी, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, 100% 62 ईयर्स का डिसेबल आदमी हूँ जी। फंड में कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ और कैसे इन्वेस्टमेंट करूँ कि मैक्सिमम रिटर्न आए? क्या आपको इससे नियमित आमदनी की भी जरूरत की आवश्यकता होगी? हाँ जी। आपको नियमित आमदनी की भी अपने निवेश से जरूरत होगी, या ये निवेश केवल वृद्धि के लिए है? पैसा वृद्धि के लिए है। जी जी, इसके लिए मेरी सलाह होगी कि 1 या 2 अच्छा मल्टी कैप फंड का चुनाव करें, और जो भी पैसा हो एक साथ न लगाएं, और बस इतना ही काफी होगा। Okay, Dhirenji, picking up from the previous question about profit booking, markets are at an all-time high, so a lot of mutual fund investors, subscribers would be tempted to probably withdraw funds. Would you advise to that extent, or would you advise them to stay invested? And is it prudent to stay invested, and if not, why? Okay, yes, there is one more dimension. There is a I would like to suggest the previous caller who was there about profit booking, that you should not book profit just because the market has gone up. But every investor should try and do some asset allocation. By asset allocation, I mean that, when we invest in equity, all our money is invested in equity sometimes, but every investor should have some allocation fixed income. Whether it be a very aggressive investor can well have, 75-80% into equity, remaining in fixed income. And because the market has gone up, that 80% in equity would have become 90%. Maybe scaled down to 10%. You will be able to reduce your regret. So having an asset allocation and rebalancing your asset allocation when the asset allocation goes for a whack, it becomes very different from what you started with. That is a way of methodically profit booking, but not in a knee-jerk way. It is not 100% or zero. It is, when your 80% becomes 90, you reduce it back to 80. If this 80 actually becomes 70, if the market comes down, you will have money to move it back to equity once again.
जी, और कोलकाता से हमारे श्रोता उदय शंकर हमसे जुड़ चुके हैं। उदय शंकर जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। ये मेरा सवाल है कि टू बेस्ट मल्टी कैप फंड, नेम ऑफ द टू बेस्ट मल्टी कैप। ओके, धीरेन जी। अच्छा, नहीं, मल्टी कैप तो ढेर सारे अच्छे फंड है, और यहाँ पे अगर मुझे कुछ गिनाना हो तो, और ये जो मल्टी कैप मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत मैं लूजली आपको बता रहा हूँ। मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि आपका पैसा हर तरह के कंपनियों में वेल डाइवर्सिफाइड हो, और इसके लिए 2-3 कैटेगरी आते हैं। एक तो मल्टी कैप कैटेगरी है, उसके अलावा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, उसके अलावा लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। इनमें से आपको चुन सकते हैं। अगर मुझे कुछ 5-7 फंड गिनाना हो तो मैं आपको गिना रहा हूँ। ये है कोटक का फ्लेक्सी कैप फंड, मिराई एसेट का फोकस्ड फंड, पराग पारक का फ्लेक्सी कैप फंड, एसबीआई का फोकस्ड फंड, और आईसीआईसीआई प्रू का वैल्यू डिस्कवरी फंड, इन्वेस्को इंडिया का कॉन्ट्रा फंड, टाटा इक्विटी का पी रेशियो फंड। ये 5-6 फंड है। इनमें से कोई भी 1-2 का चुनाव कीजिए, और जब इसमें लगाइए तो कम से कम 5 साल का नजरिया रखिए, और कभी भी एक साथ बड़ा पैसा मत लगाइए। Thank you, Dhiren ji. Could you also talk about something called systematic withdrawal plan? Who is it more efficient for? Who should opt for it? Is there an age bar? Is there a certain age category of investors who should opt for it? If you could just shed light on that. Yeah, if we are making an investment with an objective in mind, that okay, I'm accumulating this money, and when it becomes 10 lakh rupees, I will take this money out for down payment of a house or for some other objective, if for big spending. जी, और जयपुर से हमारे श्रोता बलवंत। No worries, we have our next news piece on the line. Global crude oil prices declined 3.5% this week as traders worried interest rate hikes could sap demand despite signs of tighter supplies, including lower U.S. crude stocks. Brent crude oil futures ended the week at $73.85 a barrel on Friday. U.S. crude settled at $69.16. On Thursday, Brent dropped about $3 a barrel after the Bank of England raised interest rates by better than expected 0.5 percentage point. Central banks in Norway and Switzerland also hiked rates. Higher interest rates increase borrowing costs for businesses and consumers, which could slow economic growth and reduce oil demand. Risk aversion among investors also boosted the value of the US dollar, which pressures oil prices by making the commodity more expensive for other currency holders. जी, और इस बीच हमारे साथ दिल्ली से जगमाल जी जुड़ चुके हैं। जगमाल जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। टीम को नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मैं जानना चाहता हूं कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट ओनली वेल्थ जनरेशन के लिए किया हो, कोई और सा कोई गोल ना हो, बाकी सब काम हो चुके हो, नेक्स्ट जनरेशन के लिए वेल्थ जनरेशन, तो क्या 1 लाख का कैपिटल गेन टैक्स का जो एग्जम्पशन है हर साल, उसका फायदा उठाने के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं? मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो कि आपके पास कब उतना मुनाफा होगा जिस समय आप रियलाइज करेंगे, और हर साल अगर आप उस जो 1 लाख रुपए का एग्जम्पशन है, इससे आपके ओवरऑल 10-15 साल पर 20 साल में जो आपका नेटवर्क है उससे जरूर पड़ेगा। लेकिन उसका एक नुकसान ये है कि कई बार आप पैसा निकालेंगे और अगर वापस नहीं लगा पाते तो बाजार से बाहर रहना बड़ा नुकसानदेह साबित होता है, और खासकर जब आप मेथोडिकली किसी वजह से बाहर रहते हैं। और जहां तक मेरी सलाह होगी कि पैसे को खूब बढ़ाने का तरीका यही है कि आप अपना पैसा लगाइए, कोई एसेट एलोकेशन संभाल के रखिए, कोई बना के रखिए। उसके वजह से अगर आपका कोई गेन रियलाइज करते हैं और आप एसेट एलोकेशन बदलने के क्रम में आप कैपिटल गेन्स का जो सालाना एग्जेम्पशन है उसका आप फायदा उठा पाते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन केवल कैपिटल गेन्स बचाने के नजरिए से कोई मेथड फॉलो मत कीजिए। जी,
और मुंबई से हमारे श्रोता पंकज लाइन पे हैं। पंकज नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी पंकज जी, लगता है उनसे पंकज से हमारा संपर्क भंग हो गया है। Dhiren ji, if you could just continue discussing about systematic withdrawal plan that you were discussing earlier. Yes. Yeah, it's a very important point. It's a very important subject. Everybody tells you when to sell, when to buy, what to buy. Nobody tells you when to sell. And systematic withdrawal plan is one of the simplest mechanisms. Whenever you need the money, 1 year before that, 6 months before that, start taking it out periodically dividing the money in an equated manner. So if you have accumulated 5 lakh rupees, 6 lakh rupees and you need it sometime, because you can't wait for the state of the market. You can't be dependent on the state of the market for achieving your goal. That's one. Other is that, systematic withdrawal plan proves to be a very useful mechanism, very desirable method for having a periodic, reliable income method for you. Assuming that, I'm just giving a hypothetical example, don't think of it in terms of scale. Assuming that you have 1 crore of rupees accumulated as your retirement accrual or your on which you can depend on for income. And if you decide to take out, 50,000 rupees a month, which is about 6% annual withdrawal rate, the way to do it is, set up a systematic withdrawal plan for the next 1 year. Next year, depending on the scale of appreciation or depreciation of your investment, calculate 6% and set up another systematic withdrawal plan for the subsequent 12 months. This is the way to actually draw your income from accumulated corpus, from a accumulated sum in a methodical way. And this is something which works very well. You can also periodically revise it. This is a method where, if you have reasonable allocation to equity, which will keep giving you superior return, but with great deal of, ups and downs. So you can't rely on it for every year. But most likely, this is the way whereby you can expect or have a reasonable expectation that you'll be able to derive inflation-adjusted income from your investment to support your income, whereby and eliminate the risk of outliving your savings. Thank you, Dhiren ji. We have our next caller on the line, Pankaj ji from Mumbai. Pankaj ji, please ask your question. Hi, good evening. I have 2 questions. One is, the Indian equity markets are near all-time high levels. So, are there any funds that, balance out the risk at this moment? Are there any mutual funds? Yes, there are funds which actually, claim to be doing that. Balanced advantage funds are funds like that. But I don't think, they have proven to, they prove to be reasonable, but they don't prove to be, a perfect mechanism of benefiting from a market decline or surge of this kind. But I would suggest that every investor should guard himself by having some asset allocation. If you have no asset allocation, if you have decided not to have any fixed income allocation in your investment portfolio, decide that now, take that money out, so that if the market corrects, because if you just try to benefit from timing your market, taking your money out, you could be in for a surprise. You could be in for a disappointment. There is a possibility that you will take your money out and market keeps going up. Getting back in the market again will become very difficult if it goes up by 10% again after you have withdrawn. Likewise, if you take your money out and market goes down by 5-10%, you will keep waiting for further decline, further correction, further lowering of prices when you will get in, and the markets will actually make a comeback when you least expect it. So I would suggest that devise a methodical way of doing it, and that you can do it by having a 20% allocation to equity, 50% allocation to equity, and when this 80% or 50% becomes 60% or 80% becomes 90%, it is time to take 10% off the table and put it into fixed income and move that money into equity again if the market corrects sharply. So this is the way to do it on your own. And there are conservative vehicles. For example, aggressive hybrid funds are one such, where nearly 75% is in equity
25% in debt. Balanced advantage funds are also somewhat like that, where 30-40% is into equity. 20-30% normally gets into arbitrage, whereby it gets treated as equity investment, and remaining in fixed income. So that also turns out to be a more steadier take on growth. और इस बीच हमारे साथ पुणे से समीर जुड़ चुके हैं। समीर जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर, सबको नमस्कार। नमस्कार जी, सवाल पूछिए। हाँ, पीपीएफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जी। हाँ, तो एक्चुअली क्या ना, मेरा आईओबी में अभी 5 साल से अकाउंट है, 7 लाख के आसपास पैसा है उसमें। अभी पीछे से आरबीआई ने फाइन लगाया था इनको। अगर बैंक बंद होता है तो क्या सेफ है क्या पैसा पीपीएफ का? पीपीएफ का पैसा आपका उसका बैंक से कुछ लेना देना नहीं है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा लगाया हुआ पैसा आपका भारत सरकार को आपने उधार दिया है, और बैंक केवल इसके लिए एक ऑपरेटिंग एजेंसी है। बैंक केवल आपसे पैसा लेता है और आपको सर्विस करता है, लेकिन आपका पैसा बैंक के पास नहीं जाता है, बैंक के जरिए वो सरकार के पास जाता है। इसलिए पीपीएफ में लगाए हुए पैसे के बारे में आप पूरी तरह निश्चिंत हो सकते हैं। हाँ, इसका आप हिसाब किताब देखिए कि हमेशा आपके अकाउंट में प्रॉपर तरीके से एंटर रहे। कोई आपके साथ ऐसा फ्रॉड नहीं हो कि आप पीपीएफ अकाउंट में जमा कर रहे हैं लेकिन बैंक को वो पैसा पहुंच ही नहीं रहा है और कोई जमा ही नहीं कर रहा है, जो कि ग्रामीण इलाके में इस तरह के बहुत क्रूड फ्रॉड हुआ करते हैं। लेकिन अगर आप पैसा अपना पीपीएफ अकाउंट में नियमित रूप से जमा कर रहे हैं तो इस तरह की कोई चिंता की बात नहीं है सुरक्षा के मामले में। And we have our next caller on the line, Ratnakar from Mumbai. Ratnakar ji, please ask your question. हेलो, गुड इवनिंग सर। Good evening. मेरा सवाल है, जनरली मेरा म्यूचुअल फंड में 10 से 15 लाख का इन्वेस्टमेंट है। तो अभी जो म्यूचुअल फंड स्कीम में 3-4 साल हो गए और उसमें समझो 10%, 15% प्रॉफिट है, तो ऐसे वाले मैं निकाल सकता हूँ क्या? ये एक मेरा सवाल है। और उसमें एचडीएफसी एडवांटेज फंड जो है वो कैसा चल रहा है? उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया है वो रहना चाहिए, आगे कंटिन्यू करना चाहिए या रिडम्पशन करना चाहिए? दूसरा वैसा ही एक मेरा है, मेरा ही एसेट्स वाला फंड है, उसमें क्या करना? मेरा ये एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड, उसके बारे में ही बताओ। आपका जो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड है, इसका प्रदर्शन काफी सुधरा है पिछले दिनों में। बड़े समय तक ये फंड स्ट्रगल कर रहा था और पिछले 1-1.25 साल में इसका प्रदर्शन बाकी सारी फंड्स की तुलना में और अपने इंडेक्स की तुलना में इसका बेहतर प्रदर्शन रहा है। इसमें पैसा बनाए रखना चाहिए। उसी तरह से मेरा ये एसेट का भी जैसे हाइब्रिड फंड अच्छा कर रहा है और उसे निकालने का नहीं सोचना चाहिए अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है। आपका जो पहला सवाल था कि जहां पे मुनाफा हो गया वहां से पैसा निकाले ताकि आप कुछ अपना पैसा मुनाफा रियलाइज कर पाए और निश्चिंत हो पाए, ऐसा मत कीजिए। जैसा मैं पहले किसी प्रश्न के संदर्भ में आपको बता रहा था, अपने सारे इन्वेस्टमेंट को जोड़िए और सारे इन्वेस्टमेंट को जोड़िए और देखिए कि उसमें कितना पैसा फिक्स्ड इनकम में लगा हुआ है, क्योंकि जो आपका बैलेंस एडवांटेज फंड में पैसा लगा हुआ है उसका एक खासा भाग फिक्स्ड इनकम में लगा हुआ है। तो इसको आप जरा समझिए कि आपका पैसा अलग अलग फंड्स में लगाने की वजह से आपका पैसा कितना पैसा इक्विटी में है, कितना पैसा डेट में है। और ये जब आप देखेंगे, क्योंकि आपका जो बैलेंस एडवांटेज फंड में लगा हुआ है उसमें करीब 26% डेट में है, 60% इक्विटी में है, 12% कैश है इसमें और 2% रियल एस्टेट में भी लगा हुआ है। तो ये पैसा आपका काफी डाइवर्स है। तो आप देखिए कि आपके अलग अलग फंड में लगा होने की वजह से आपका पैसा कितना डेट में है और कितना इक्विटी में है। इक्विटी में अगर आपका, और देखिए कि आपको 25% डेट में रखना है, 35% रखना है, लंबे समय का पैसा हो तब भी, और अगर वहां से बढ़ गया है तो इक्विटी से थोड़ा पैसा निकालिए, अगर उससे कम है तो अपना निवेश जारी रखिए। लेकिन केवल मुनाफा हो जाने की वजह से अपना पैसा निकालना ये उचित नहीं होगा। हो सकता है बाजार यहाँ से लगातार अभी चलता रहे और निकालने के बाद आपको अफसोस हो। Dhiren ji, I had a small question for you, and if you could share the answer succinctly. As the RBI tries to keep the repo rate on pause for the second straight time, MF
operators, will they move to investment in treasury bills over government bonds? And if so, how will it affect these schemes? And why would they do so if they make this choice? No, actually mutual funds do the kind of debt fund that that Indian investors invest in. These decisions are made by the investors themselves, not the fund managers. Because, we have an extremely sophisticated and very confusing fixed income fund options. There are 16 kind of debt funds. If you want to invest in money market funds, money market instruments only, there is one. If you want to invest in just overnight security, there is another kind of fund. If you want to invest in treasury bills and, securities maturing in the next 1 year, there are liquid funds. So on and so forth. If you want to take credit risk, there are funds. If you want to invest only in yields, you're one. So fund managers are not taking that call. Investors are taking that call. And I would agree that, treasury bills may have become attractive, and, they are yielding reasonably higher return today, and the return on the liquid fund and the ultra short-term bond fund has gone up in the recent 1 year, but this is very much a phase which Indian debt fund investors have been used to. And with that, we come to our last piece of news. India has achieved the milestone of 101 million metric standard cubic meters per day of gas production. In a Twitter post, Union Minister Hardeep Singh Puri said that feat reflects the untiring efforts of India's energy soldiers and the impact of policy reforms. He said it is a significant step towards becoming a gas-based economy. Mr. Puri said, since India imports about 50% of its natural gas requirement, enhanced gas production within the country will reduce import dependence. He added that it will bolster efforts towards a sustainable, affordable and securable energy future for Indian citizens. और जयपुर से हमारे श्रोता बलवंत का पूछना है कि ग्रोथ फंड और डिविडेंड फंड्स इनके बीच में अगर तुलना की हो तो कौन सा बेहतर निवेश का ऑप्शन है? जी, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन और बड़ा जरूरी क्वेश्चन है. जब भी आप इक्विटी फंड में लगाएं तो ग्रोथ ऑप्शन में लगाएं, क्योंकि जो इसमें जो आपको डिविडेंड मिलता है, म्यूचुअल फंड से डिविडेंड आप अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे जितना चाहे निकाल सकते हैं. तो डिविडेंड का कोई खास औचित्य है नहीं. आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा बढ़ाने के लिए, ग्रोथ ऑप्शन का चुनाव करें, चीजें आसान रहेंगी. जी, और चलते चलते मौसम का हाल भी जान लेते हैं. मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 दिन में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों तथा जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों में प्रवेश कर सकता है. मानसून आज मुंबई सहित महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में पहुंचेगा. यह गुजरात के कुछ भागों, जम्मू और कश्मीर के कुछ भागों और लद्दाख में भी पहुंच जाएगा. देश में अगले 5 दिनों तक लू नहीं चलेगी. और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर. धीरेन जी इस कार्यक्रम में भाग लेने और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद. धन्यवाद आपका. And before we close, a reminder of the headlines. 7 IPOs worth 1,500 crore rupees to hit the markets this week. Foreign investors pump in over 30,000 crore rupees into the Indian equities market so far in June. And southwest monsoon advances over parts of east, central and northwest India, including Delhi, Mumbai and its suburbs. And that's it in this edition of Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.